Delhi-Jaipur highway is as smooth as butter. Like, throughout the journey, we didn't feel that we were on a highway in India. So it's a newly built road. So yes, obviously it's very nice. And guess what? On the way, there's a place where which is like controlled by monkey goons. Can you believe that? So our driver stopped by to buy fruits, and we were like, is he health conscious or something? And but then when on the road he stopped to offer the fruits to the goons, then we understood, okay, he bought the fruits for these monkey goons. Like, supposedly if you don't offer something to these goons, they won't let you pass by. And look at that, the monkeys won't let the bikers go by because obviously they didn't give any food to them. So now they're calling their friends to bring down some fruits so that they can go from here. So friends, we stopped over to a highway restaurant called Desi Tart, and the uniqueness about this restaurant is that the vegetables that come in this restaurant are picked up from the nearby fields every morning, and the food is cooked by the women of the nearby villages in this restaurant. So it's kind of authentic Rajasthani dish, which was like awesome. Like we were having Rajasthani dish after a long time, maybe 3 years, after 3 years, and it was like we ate up till here. Like normally we don't eat so much when we are traveling, but this time we could not resist ourselves, so we ate up till here, and then again we started our journey forward to Jaipur. And then friends, the journey continued, and the more I kept gazing outside, the more I started getting philosophical. Like, Rajasthan is the land of Rajas, and its bright culture has so much to offer, yet it remains unexplored for many decades now. And along with its vast heritage, it's also famous for many unresolved mysteries and haunted forts and abandoned villages and the chalavas. So I think I find Rajasthan the most intriguing of all the places in the world, and I want to tell you about the chalavas because I know many people who do not stay in India do not know what a chalava is. Like, chalava is like a paranormal creature who has special skills to do chal. It's a kind of ghost, and often belonging to a small child or a mesmerizing woman. Like, they lure victims into deep forests or to abandoned place, confusing and exhausting them till they finally give up and collapse. And then once the victims collapse, it may pounce on the victims and may kill them. A chalava can take the form of anything. Like, it could be an animal, a man, woman, child, anything to allure their victims to a deserted place. His eyeballs doesn't remain constant, like it's not stable, it keeps on moving constantly. So if you were to believe in chalavas, and if you were to encounter any chalavas on the highways or the deserted places in Rajasthan, you can distinguish them by looking at their eyeballs. If it's constantly moving, it's a chalava, so better stay away or run away from that as soon as possible. So, but I don't believe it because obviously people who believe in paranormal creatures might believe it. I have never encountered one, so yeah. इससे मजा तो वहाँ पे है अपने चार धाम यात्रा में। वहाँ गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 200 किलोमीटर का रास्ता 8 घंटे में कंप्लीट होता है। So friends, we reached Jaipur at around 3 in the afternoon, and then we checked in, we freshened up, and straight away we headed out for Chokhi Dhani because we did not want to waste the evening sitting back and relaxing in the hotel. It's like, it was a short tour, just 2 or 3 days. So दोस्तों, शुरुआत होगी बजरंगबली के मंदिर से। So जय बजरंगबली। और आप
आपको पता ही होगा राजस्थान में कहीं भी घर पे जाओ तो बजरंगबली जी के मंदिर ज़रूर पाएंगे। तो हम उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ का एंट्रेंस है और यहाँ पे स्वागत होता है बिल्कुल टिपिकल इंडियन कल्चर की हिसाब से। तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक के साथ स्वागत करेंगे, टीका वीका करेंगे और आपको अगर टिप्स देना है तो ज़रूर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ सच अ वार्म वेलकम एवरीबडी गिव्स, सो यू शुड ऑल्सो गिव देम। और उसके बाद हम अंदर जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे माहौल हमेशा दिवाली की तरह ही होती है। द लैम्प्स आर ऑलवेज लिट, द प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल कि ये बिल्कुल थीम्ड विलेज है राजस्थान का। सो या आप अगर जब हम अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आप सिर्फ चौकीधानी आ जाएंगे ना तो आपको राजस्थान की विलेज की पूरी फील, एक्सपीरियंस सब कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों घुसते ही आपको दिखेगा ये हॉल एंड दिस इज़ बेसिकली यहाँ पे काउंटर है जहाँ पे आप रेस्टोरेंट का टिकट्स लेंगे एंड दिस इज़ टर्न्ड इनटू गैलरी, the village gallery, art and crafts gallery, as you can see। और ये झूमर, ये umbrellas, these umbrellas are handcrafted, hand stitched by the craftsmen, the women of this village। So हम लोगों ने tickets ले लिए हैं। We have taken vegetarian थाली and it was 700 rupees per head। और अंदर जाने के यहाँ पे भी दोस्तों पता नहीं इंडिया में क्यों हर जगह नॉर्मली आप घुस नहीं सकते, देयर विल बी अ सिक्योरिटी चेक, दैट इज़ ये हमारी दुर्भाग्य है। बट एनीवेज वी आर नॉट कैरिंग एनीथिंग बैड, सो सिक्योरिटी चेक घबराने की कोई बात नहीं है। दे विल चेक योर बैग्स एंड योर बिलोंगिंग्स और उसके बाद आप आज़ाद है पूरा विलेज टूर करने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे आते ही आपको दाहिनी तरफ मिलेगा द लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड दिस विलेज। सो लेट्स चेक इट आउट। So दोस्तों this is called Kalagram and Craftsman Village Fair and यहाँ पे लिखा है सांगरी डाइनिंग, चॉपर डाइनिंग, गौरबंद डाइनिंग, घूमर डाइनिंग, रॉयल राजस्थानी डाइनिंग, मतलब ये सब रेस्टोरेंट्स के नाम है। जीमान खास रिसोर्ट डाइनिंग, पपेट शो तो राजस्थान का स्पेशलिटी है। मार्बल प्ले जोन, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए, इतना सारा है। देयर इज़ दिस लॉर्ड शिवा टेम्पल और यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी मेला लगा हुआ है। एंड देन इफ़ यू रियली वांट टू डू सम शॉपिंग फ्रॉम द टिपिकल विलेज यू कैन गो अहेड, बिकॉज यहाँ पे मोजरी बहुत अच्छी मिलती है एंड रीजनेबल प्राइस में मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा एरिया लेके ये विलेज रिसोर्ट है। एक्चुअली इनका तो खुद का होटल है एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, एन एंटरटेनमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट ऑफ राजस्थान विजिट चौकीधानी। सो या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। सुबह भी आएंगे तो भी आपको टिपिकल सुबह राजस्थानी विलेज का सुबह का जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा। और हम लोग आते ही क्या बोले उसको, शिकंजी पिए थे एंड यू नो यहाँ पे काउंटर है शिकंजी का, आपको जाते ही पिलाते हैं वो लोग बहुत ही प्यार से। एंड दिस शिकंजी माइंड यू इज़ द राजस्थानी टेस्ट, सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल शिकंजी दैट यू गेट इन दिल्ली। एंड देन वी हेडिंग टुवर्ड्स कलाग्राम और यहाँ पे म्यूज़िक सुन के मुझे लग रहा है कि चिकाकुनी मतलब बहुत ही नज़दीक कोई घूमर डांस चल रही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं तो यू कैन जॉइन दिस डांस डेफिनेटली। जैसे कि आप देख सकते हैं the audience have also joined the dance। ओके दोस्तों, तो ये है कुआ जहाँ पे राजस्थानी विलेज वुमेन
fill up their water for their everyday use, and you can see. और ये जगह की बात मैं बोल रही थी जहाँ पे मेला टाइप लगा हुआ है. This is for the kids, they can play. एंड यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हैं सिटिंग ऑन द एलिफेंट, विच आई डोंट लाइक बिकॉज इट्स 8 o'clock at night and the elephant is waiting for somebody, I mean doing worship. This is the worst thing about चौकीधानी. और फिर उसके बाद हम जाएंगे पेट पूजा करने बिकॉज दैट्स द रीज़न वी आर हियर. और सुबह से बहुत लंबा सफ़र था हमारा, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से यहाँ तक. सो या पहले पेट पूजा, उसके बाद हम घूमेंगे गांव में, क्योंकि गांव में सब खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं. सो वी वांट टू टेक द फुल फील ऑफ दैट थिंग. और यहाँ पे एक बंदा मिला था जो कि वेटर का काम कर रहा था और उसका सर्विस था टॉप क्लास. दिस वन, द वन हु इज़ वॉकिंग बिहाइंड, इनका सर्विस एकदम टॉप क्लास सर्विस था. ये मतलब ये अगर जापान आ जाए ना तो सर्विस इंडस्ट्री में ये बहुत तरक्की करेंगे. ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, ही हैज़ सो नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर. और खाना तो ये ज़बरदस्ती मतलब मम्मी की तरह खिलाते हैं, और खा लीजिए, घी लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए. एंड ही इज़ सो एक्टिव इवन एट 8 o'clock at night. दिस गाय, ही इज़ सो एक्टिव. हमें तो बहुत अच्छा लगा था. एंड ऑफ कोर्स वी टिप्ड हिम बिकॉज इतना अच्छा सर्विस मिलने के बाद अगर टिप ना दो, दिल खुश हो गया इसका हाथों का खाना खा के. एम्बियंस तो आप देख ही सकते हैं, टिपिकल विलेज एम्बियंस. और दोस्तों खाना ये है चूरमा, इट्स स्वीट. सबसे पहले खाते हैं राजस्थान में, और खाना तो आप देख ही सकते हैं, एक के बाद ईट एज मच एज यू कैन. सो जापानीज़ अगर जाएंगे तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी. एंड वी वेर लिटरली स्टफ्ड, मतलब जो भी जाता है ना दे विल बी स्टफ्ड. और इनकी सर्विस और इनकी प्यार से तो और भी खा लेंगे. सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कलाग्राम क्राफ्ट्समैन्स विलेज. इट्स मार्केट प्लेस, मार्केट जैसा बना रखा है अंदर. और यहाँ पे एक मोजरी शॉप है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे. इट वॉज वेरी रीजनेबल प्राइस. उस वक्त सेल भी चल रहा था जब हम गए थे. एंड दिस वॉज सो नाइस. देखिए ये ऐसा आपको राजस्थानी कपड़े मिलेंगे. बट माई फेवरेट वॉज मोजरी बिकॉज आई लव टू वेयर मोजरीज. ये टिपिकल लेदर का होता है. सो अगर आपको पैरों में पसीने भी आते हैं देन ये सोक कर लेता है. सो यू डोंट गेट द फंगस एंड ऑल दैट इन योर फीट. एंड राजस्थानी पीपल वेयर देम अ लॉट. नॉट ओनली इन राजस्थान, हरियाणा में भी लोग बहुत वो करते हैं, पहनते हैं. एंड देन वी हैव अनदर शो गोइंग ऑन ओवर हियर. एंड दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ डांस ऑफ राजस्थान. ये बैलेंस करेंगे अपने सर के ऊपर 3, 4, 5 मटके, एंड देन शी विल डांस. सो एंजॉय द डांस. इट्स जस्ट अ शॉर्ट क्लिप फॉर यू. सो दोस्तों जब आप थक जाएंगे तो यहाँ पे आराम करने का पूरा बंदोबस्त है. ओपन एयर स्पेस टू सिट, और यहाँ पे वेलवेट का चद्दर भी है. सो यू फील नाइस. सो
guys, one of the best ways to enjoy the culture of Jaipur is to visit the Albert Hall Museum, because a museum has exclusive collection of artifacts, objects, and all kinds of art forms from ancient times. So this place is popular for history buffs, photo fanatics, experience seekers, and also wanderers like us. So, guys, this building is named after King Edward VII, Albert Edward, because he laid the foundation stone of this building during one of his visits to the city of Jaipur as the Prince of Wales. So guys, this building is a fine example of Indo-Saracenic architecture, which was actually revival architectural style, which was used by the British architects in India in the later 19th century, especially in the public and government buildings during the British rule. So guys, initially Maharaja Ram Singh wanted this building to be a town hall, but his successor Madhu Singh too, he wanted this building to be a museum, so he included this because he was a great lover of art. Guys, you won't believe if I tell you this, but there are actually 16 galleries in this museum, so yeah, it's gonna take some time to explore. So guys, this section is the metal art section, and the metal works belong to the 19th century. So yeah, you'll get figurines made with bronze, zinc, brass in this collection. So guys, this one is the ornate silver hookah from Punjab, and this belongs to the 20th century AD, and it also has gold plated leaves as designs emerging from its engraved body. And the best thing is the mouth of the smoking pipe, it is shaped like the jeweled hand of a lady. So yeah, kind of interesting. So guys, this section belongs to the famous Jaipur blue pottery section, and these are the blue pottery tiles, and also the pottery, these are displayed by the Jaipur School of Blue Pottery Arts. So yeah. So guys, these are ancient chillums, and chillums are clay pipes used to smoke up tobacco, opium, narcotics, etc. So yeah, and the difference between hookah and a chillam is in hookah the air passes through a water filter, and a chillam is like you smoke it up directly. So guys, this one is the Lakshmi Narayan statue, and this sculpture belongs to the 15th century, and it's a black stone sculpture. And obviously this gallery will hold the weapons and armors used by the Rajputs, Mughals, Turkish, Hyderabadis. So yes, you will get to see a collection of spears, arrows, bows, warrior helmets, swords, etc., etc., anything that was used in the war. So guys, these paintings are called Shahnama, which is like, these are Persian literature books. So, it talks about the ancient kings of Persia and was frequently illustrated both in Persia as well as India in those times. And then this is the coin collection of the 11th century and before. So we will find Delhi coins, British India coins, ancient Indian coins, Gupta reign coins, Mughal coins, etc. So yes, this section is truly for the numismatics. And then moving forward, this section is the kings of Jaipur and their armorial insignia.
And guys, this one is the musical instruments section. Indians give grave importance to music arts and dance forms. So yes, you will find rabab, karna, there are the names I can't even pronounce them. So yes, these are the ancient musical instruments. And this section features the garments with local Rajasthan textile work like gotapatti, sanganari print, lace work, ancient embroidery, bandhni, kota doria, etc. So this one and the next section, which is the jewelry section, are my favorites. And last but not the least, my favorite section, jewelry. These are the royal jewels, which are expensive and antique, and I feel like taking them home with me, but you will find golden waist belts and then ear studs, earrings, foot ornaments and others. This is my favorite section. So guys, I hope you liked the Indian history which is preserved well in this museum. And then we went ahead to Amber Fort, and as soon as we entered the Pink City, on the left you can stop over for Hawa Mahal, but we were already running late, and we wanted to take our sweet time and explore the bigger forts, so we did not stop over at Hawa Mahal. We decided to let it go and we went straight to Amber Fort. Look at that. That's Amber Fort, also known as Amer Fort or Palace, and there's a huge history associated with this fort. This fort is located on the Hill of the Eagles, and in Hindi it's called Chilka Tilla, and this is the Aravalli range of mountains, and Amer is the name of the town, hence this fort or palace was named as Amer Fort, or it's also called as Amber Fort. And normally the tour buses will stop here, and visitors you have to either walk up or take the jeep or the elephant ride. I am totally against riding the elephant because they are ill-treated in Jaipur, so we just drove straight up because it's best to take the car to the fort. And the main water source of this entire city was the Mauta Lake, which is like behind the Amer Palace. And Amer Palace was the residence of the Rajput Maharajas and their families, so it was a royal residence in the past. गवर्नमेंट ना बहुत वो हो गई है आजकल, बल्कि गवर्नमेंट के इन लोगों को संरक्षित कर देना चाहिए। वो लोहे का कीला मारते हैं इनके ऊपर। And look at that spectacular view from the top. That side is the Jaigarh Fort, and the town of Amer was originally built by Meenas. It's a kind of it's a race in India, and later it was ruled by Raja Man Singh I. पन्ना मीना ने बनाया था, जिसका नाम था, उसी लिए इसको जाना जाता है पन्ना मीना। वो ट्राइब है राजस्थान में एक, जो पुराने वॉरियर्स हुआ करते थे राजपूतों के। मीनाज दो होते हैं, एक चौकीदार और एक चोर, वो है ही है। अच्छा, जो चोर होते हैं उनको वो बावरिया भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बावरिया बोल दिया गाँव में। ठीक ठीक, वही। ये दो बना रखे मतलब कपड़े बदलने के लिए, कपड़े बदलो, नहाओ और निकलो। जी जी जी, ये पूरा एरिया टेम्पल एरिया, चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे है। ये 16वीं शताब्दी, 16th century। Walls we are talking, they are in 12 kilometers. In the middle, these are the stairs used by the soldiers to go on the top to guard the city in the night time. नहीं सर, यही पड़ी हुई थी। जोधाबाई जो है राजा भारमल की एक वो बोले तो सौतेली लड़की थी। जोधाबाई एक फ्रांस की जो थी लेडी, उसकी लड़की है। वो जोधपुर नरेश के पास रहती थी। महाराज गज सिंह जी के जो पिताजी थे, तो वहाँ से राजा भारमल ने दूसरी शादी करी जोधपुर से, तो फिर उनके साथ आई जोधाबाई। नाम वहीं से दिया गया है इसका, जोधा। वो वहाँ से दूसरी शादी राजा भारमल करके लाए, फिर उनके साथ आई थी रानी जोधाबाई। बचपन यही बीता उनका, यहीं से बड़ी हुई।
are in Jaigarh Fort, which was built by Raja Jai Singh II to protect the Amer Fort and its palace complex. And basically, this fort was to house the royal military or the royal army of the then Maharaja. Okay, and this one is the Jaivana cannon, and it was built in the 18th century. And the interesting story behind this is this cannon was never used in any battle. It was only test fired once, and it was charged with 100 kilograms of gunpowder, and it covered a distance of 35 kilometers. It is said that the surrounding places where it was fired were completely destroyed, and the residents in the nearby villages also suffered from hearing loss. So after that, this cannon was never used in any war. ये देखिए आप जो सामने पानी के बीच में पैलेस देख रहे हैं, बना हुआ जल महल है। ये गर्मियों के अंदर रहने के लिए सवाई प्रताप सिंह राजा ने अपनी क्वींस के लिए समर टाइम में रहने के लिए 2 पैलेस बनवाए थे, तो जल महल और सिटी के अंदर हवा महल, दोनों समर टाइम में रानियों के लिए रहने के लिए। और ये वाला जो फोर्ट आप घूम रहे हैं ना अभी, इस किले में राजा लोग यहाँ पे रहते नहीं थे। यहाँ पे अपना खजाना रखते थे, यहाँ पे उनके सैनिक लोग रहते थे। So guys, this is the final stop for the day, the City Palace, and this is now the residence of the Jaipur royal family, and they are said to be descendants of Lord Rama. Now there's one interesting fact, in Jaipur 2 flags are hoisted. So when the king is in town, both the flags will be hoisted, and when the king will be away, only one flag will be hoisted. And there are several things to explore in this place, like the Chandra Mahal, the Mubarak Mahal, Sri Govind Dev Temple, and the City Palace Museum. And we had ample time because it was the end of the day. Yeah, we explored a lot. And also guys, right across the street from the City Palace is the Jantar Mantar. So if you would set out early and if you can make it before 5 o'clock in the evening, then definitely you can also visit Jantar Mantar on the same day and then return back for the day. So guys, we set out for Pushkar early in the morning, and the further we came away from Jaipur, the more I realized that the real feel of Rajasthan, or the huge vast desert, lies in Jaisalmer, Jodhpur, Pushkar, and not in Jaipur. Jaipur is a city which is well endowed, but the further you come from Jaipur, the more you realize that this is the real desert, where actually you get to see the cactus plants and the camels and the dryness and the myriad. So that was the only thing going on in my mind, I gaze through the window whenever I'm traveling. So those are the things that went on in my mind, and I was wondering, this is incredible. And guys, if you can see that temple right at the top of the hill, that is the temple where the famous Karan Arjun movie was shot. कैमल सफारी भी कर सकते हैं, 1 बजे है सर, 1:10, तो वो 1-1.5 घंटे की राइडिंग होती है, अगर करना चाहो तो आप। मैडम को तो राइडिंग होती है जैसे ये जा रहा है, जैसे भी होती है, सिंगल ऊँट होता है, उस पर आप बैठ के जा सकते हो। चलना तो So guys, the greenery that you see around is because of the water source of the Pushkar lake, and I was surprised to see that all the places in Rajasthan, Jaipur and Pushkar are neat and clean in spite of their water scarcity, and also the toilets over here are cleaner than any other metropolitan cities in India, which is a great thing. And we are waiting for a camel to get ready, and excited about it. So guys, we booked a camel safari for 2,500 rupees, and I think it's pretty good, but if you would want a cheaper price, you can go around and bargain.
So guys, this is our camel Moti, and she gets her tail dyed every 1 or 2 months, and also she's got these dyed tattoos all over her body. So yeah, good maintenance. ये तो देख ही नहीं रहा है मेरी तरफ। इसको चारा नहीं खिलाना। क्या देखा देखा। हेलो। इसको मारियो मत। नहीं मारूंगा। ये मेरा कैमरे में आ गया। चाहिए ना, ताकत लगी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाल हो जाते हैं। एक भी हरा वाला दे दो। हरा वाला एक ही ले लो। हाँ, आप भी ले लो। नहीं चाहिए। एक ही बहुत है। हाँ, हरा वाला में मैच करेगा ना। चश्मा ये वाली घड़िया तेरे नहीं ओलिया में उड़े ये गुलाल ये मंगे तेरे नहीं मेरी मंगे उड़े ये गुलाल ये मंगे तेरे नहीं। You must be wondering that I did not show you the Pushkar Lake or the Brahma Temple is because in this trip we also went to Salasar and Khatu Shyamji, and I went as a pilgrim, and when I'm surrendering myself to the Supreme Power, when I'm connecting with the Supreme Power, obviously I would not take out my camera and record the stuff, so I'm leaving that for you to experience yourself, because these are the places where you come once or twice in a lifetime, and you wouldn't want to miss out that ambience, that atmosphere where you are connecting yourself to the Supreme Power. You know, that thing I did not want to miss, so I did not take the camera along with me on those trips. So yeah, it was a wonderful experience for me for being able to visit these pilgrim places, and as you can see, any highway at night is dangerous, so we were not letting our driver utter a single word and just concentrate on his driving. And yes, उड़े ये गुलाल ये मंगे तेरे नहीं।